Alright, guys, welcome back to another lecture of atomic structure. Today, we'll be talking about electronic configuration, which will be our today's topic, and then this chapter is finished before starting the basics of chemical bonding. Now, what are we going to study today? हमने लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, व्हाट आर द डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपके पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास फिर डिफरेंट शेल्स भी होते हैं एक एटम के अंदर ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल्स। हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। So the electronic structure basically, this electronic structure, we can represent the structure of the atom in two ways, using the diagrams called electron shell diagrams or by writing out a special notation called the electronic configuration. तो आपके पास different, you have different ways of presenting or letting someone know the electronic configuration. Let's say we'll talk about magnesium. Magnesium in the periodic table is what? 24 and 12. Before representing the electronic configuration of magnesium in two types of different ways, हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जो different shells होते हैं, n is equal to 1 means the first shell, n is equal to 2 means the second shell, n is equal to 3 would mean the third shell, and n is equal to 4 will mean the फोर्थ शेल। ठीक है, अभी हमने ओ लेवल्स आईजीसीएसई में हमने ये फोर शेल्स ही कवर करने, बाकी आप ए लेवल्स में देखोगे व्हेन यू टॉक अबाउट सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स एज वेल। सो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अब एक एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इन द फर्स्ट शेल वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकंड शेल we can have a maximum of 8 electrons, in the third shell we can have a maximum of 8 electrons according to O levels and iGCSE at this level, and the fourth shell we can have a maximum of 18 electrons। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, मूविंग ऑन टू 8 8 18, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आपका जो हाईएस्ट हमने जहां तक याद रखना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? 20। अब कैल्शियम 20 का मतलब है कि इसके 20 प्रोटॉन्स हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स भी ही है, बिकॉज इन एन एटम प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। नाउ 2n² वाला जो आप रूल मेंशन कर रहे हो, कर सकते हो आप याद, वो आपको ए लेवल्स में जाके ज्यादा हेल्प करेगा। अभी एट दिस लेवल यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी टाइप ऑफ रूल कि 2n² का मतलब क्या होता है। जस्ट गेट्स कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। दिस 2n² लाइक इट विल टेल यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल रिवाइज कर लेंगे एंड जस्ट मेमोराइज सम ऑफ देम एज वेल। जैसे आई मेंशन इन द प्रीवियस क्लास दैट आई वुड लाइक यू ऑल to actually memorize the first 20 elements के protons, electrons, neutrons, mass number, उनके symbols क्या हैं, आपने हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आप वैसे ही याद रख लो। तो हाईएस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगी कैल्शियम तक आपके ओ लेवल्स एंड आईजीसीएस में। अब कैल्शियम क्या होता है? 20 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे फिल होंगे? पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे शेल में आएंगे 18, 8 आएंगे, तीसरे शेल में आएंगे 8, और पीछे कितने रहेंगे? 2 + 8 10, 10 + 8 18, दो और चाहिए, तो फोर्थ शेल में आ जाएंगे 2 electron. This is the highest electronic configuration that will be asked in your IGCSE on O levels. अब यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 12 एज द एटॉमिक नंबर। दिस वुड मीन दैट मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसमें। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 10 हो गए, पीछे रह गए दो और। This is the electronic configuration and we call it the notation form. This is known as notation. दूसरा तरीका है कि हम ड्रॉ कर लें। अगर आपके पास ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस विल बी योर फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल के अंदर हमने दो सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, क्योंकि याद रखो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ तो प्रेजेंट हो नहीं सकते अनलेस दे आर पेयर्स। नेगेटिव चार्ज हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू कॉज व्हाट, वो तो एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे। फिर आप बनाओगे सेकेंड शेल। ठीक है, दिस इज द डायग्रामेटिक लीवेज स्ट्रक्चर, इसको हम लीवेज स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में शो करेंगे। सम इलेक्ट्रॉन्स यू ऑलवेज हैव टू शो इन पेयर्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपने दो दो के पेयर्स बना के रिप्रेजेंट करने हैं। और जो आपका थर्ड शेल होगा
उसके भी अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, विच विल बी शोन सेपरेटली। ये नहीं कि आप उनको पेयर के अंदर दिखा दो। सो दिस इज द डायग्रामेटिक, या फिर इसको हम लुईस स्ट्रक्चर या डॉटिंग क्रॉस डायग्राम का भी नाम दे देते हैं। We all know that न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, whereas the electrons that are there in an atom, electrons orbit the nucleus in shells, और shells को हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, energy levels, and each shell has a different amount of energy associated with it. The further away from the nucleus, then the more energy a shell would have. Electrons occupy the shell closest to the nucleus, which can hold only two electrons and which go in separately. अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन सारे अपनी जगह पे खड़े कैसे हैं इस एक एटम के अंदर, बिकॉज न्यूक्लियस आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक मास है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके उनको एक सेंट्रीपिटल एक सर्कुलर फोर्स मिल रही है, दैट कीप्स देम इन शेल, और उनको बाहर जाने से या उनको एस्केप करने से रोका हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो देयर, दैट इज एक्चुअली इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होती है जो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज वन, और इसके साथ अट्रैक्शन होगी जो आपके पास इसके इर्द गिर्द शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ इसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, विच इज कीपिंग ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस। When a shell becomes full, electrons will then fill the next shell. वही बात होगी कि अगर आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। When the first shell is full, then you always move on to the second shell, which is going to be filled by 8 electrons. After that, you move on to the third shell, which again has 8 electrons. और अगर वो भी भर जाए तो फिर आप fourth shell move करो, which has a capacity of up to 18 electrons as well. The second shell can hold 8 electrons, and the third shell can also hold 8 electrons, and the electrons then organize themselves in pairs in these shells as well. मैंने कहा ना, जब आप ड्रॉ कर रहे हो पेयर्स में शो करने, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो पेयर्स में शो कर देंगे। अब ये नहीं करना है, इनमें से ये दो पेयर में आएंगे, लेकिन ये वाली जगह अब खाली है, तो आपको इन दो को अलग अलग करके शो करना पड़ेगा। यू थिंक कि यहाँ पे मार्क्स शायद नहीं कटे, कटते हैं, बिकॉज यू नो दीज इजी थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट इज गेटिंग टफर एंड टफर बाय द ईयर एज वेल, विद चेंजिंग सिलेबसेस एंड टाइम एंड एग्जामिनेशंस टाइप एंड ऑल दैट। तो ये तरीका है 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने को। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस तरह करके रिप्रेजेंट कर देना। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप ऐसे एक पेयर में कर सकते हो, एक इस तरह कर सकते हो। जो आप पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी यू कैन लाइक शो देम इन अ पेयर एज वेल, और सिंगली शो कर दें। इफ यू हैव 5 यू कैन शो लाइक 2 ऑफ देम इन पेयर, वन सेपरेट एज वेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपने 4 पेयर शो करने हैं। और जो हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या हर एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज द वेलेंस शेल। वेलेंस का मतलब लास्ट, वेलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। एंड एन एटम विल बी ऑलवेज मच मोर स्टेबल इफ इट कैन मैनेज टू कंप्लीटली फिल द शेल विद इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्लोरीन है, अब क्लोरीन इज व्हाट 17, and this means that chlorine has 17 protons, and we know that electrons and protons are always equal to each other. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैन समवन टेल मी? ओपन अप योर माइक गाइस। अशर, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? ऑलराइट, 287। ओके, मेरे सामने जवाब दिया है दैट इट इज 287 एग्जैक्टली। फर्स्ट शेल में दो आ जाएंगे, सेकंड शेल में 8 आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए, और फिर 7। अब इसका लास्ट शेल जो है वो फिल नहीं है, क्योंकि लास्ट शेल की कैपेसिटी क्या होती है, अभी हमने नीचे पढ़ा है कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इन द थर्ड शेल वी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ डू वी डू दिस, ठीक है। इफ अ थर्ड शेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनस्टेबल स्टेट में है अभी। दिस इज नॉट दैट स्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब ये आगे जाके हम पढ़ेंगे एक गेन कर लेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगी 288, तब हम कहेंगे कि वो स्टेबल हो गया। बिकॉज एनी एटम दैट हैज अ कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल और द कंप्लीट वेलेंस शेल, इट विल ऑलवेज बी अ मच मोर स्टेबल वंस देन द अदर।
So we have till now discussed that the first shell contains 2 electrons, the second shell contains 8 electrons, and the third shell contains 8 electrons as well. Can someone tell me the electronic configuration of sulfur? Anyone? Okay. हम्म। और याद रहे कि अगर सल्फर की पूछी गई तो ये भी फर्स्ट 20 के अंदर ही आता है, और मैंने कह दिया कि फर्स्ट 20 मतलब आप लोग मेमोराइज कर लो. इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट, numbers and all of that stuff. You'll need to be familiar with the structure of an atom before going any further, and you may wish to look at the lesson Parts of an Atom, Their Charge and Their Mass first. Electrons are arranged in energy levels or shells around the nucleus of an atom. The actual orbit shapes are a bit too complicated to cover in such a short lesson, but on average, the orbital radius increases as the energy levels increase. In our diagrams, the shell nearest the nucleus is going to represent the lowest energy level or shell, and we draw a circle to depict each shell. We use a dot or a cross to represent each electron, and we'll represent the nucleus by the chemical symbol. Each electron in an atom is in a particular shell, and the electrons must occupy the lowest available shell nearest the nucleus. So, when we are drawing the electron configuration, we have to fill up each shell in turn, starting with the lowest. We'll take a lithium atom as an example. With an atomic number of 3, it must have 3 electrons to balance the positive charge of the 3 protons in the nucleus. It's worth remembering that the atomic number tells you the total number of electrons in a neutral atom. So, we put the first electron into the first shell, and the second. However, this shell can only contain a maximum of 2 electrons. That's one of the rules that you need to remember. The third electron, therefore, must go into the next shell, which we draw as a larger circle around the outside of the first. And that completes the electronic configuration of a lithium atom. The same process of filling up shells applies to larger atoms. You always start with the lowest available shell, and whenever a shell is full, the next electron to be added goes into the next shell. And that's pretty much it. All you need to know is how many electrons can occupy each shell, and at this level, you only need to know the rules for the first 20 elements. The maximum numbers are as follows. The first shell can contain a maximum of 2 electrons. The second shell, up to 8 electrons. The third shell also has a maximum of 8 electrons. And the 19th and 20th electrons go into the fourth shell. And this would actually represent a calcium atom. Note that as we fill up each level, we've been drawing the electrons evenly spaced out on each shell. This is to keep the diagrams tidy and make it easier to count the electrons. And what's more, there's a shorthand way of writing this down. 2, 8, 8, 2. The first number represents the inner shell or lowest energy level. The full stop shows how the electrons are separated between the shells. The second number tells us how many electrons are in the next shell, followed by the third and fourth shells. And so now it's your turn. I'd like you to draw the electron configuration of a carbon atom. So can someone tell me the electronic configuration of a carbon atom? Yes. What will it be? चलिए 2 4. Yes, Sirf Mipsam is answering the questions. I would like you all to also open up your mic and answer as well. Abdul Hafiz has also said 2 4. Exactly. आपके पास first shell के अंदर 2 electrons आएंगे और second shell के अंदर आपके पास 4 electrons आ जाएंगे. Good job.
Pause the video, find a piece of paper and have a go. And here is what it should look like. It has a full first shell and 4 electrons in the outer shell. Did you get it right? Now, how would you write the electron configuration in numbers for this atom? Pause the video again or rewind if you need to have a think about this. The answer is that it would be written 2.4. Okay, moving on. So the arrangement of electrons in the shells can also be explained using numbers. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए जितने भी, एक तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि फर्स्ट शेल के अंदर आप ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रॉन्स आइदर सिंगली या फिर पेयर्ड. Arrangement of electrons in shells can also be explained using numbers, and there is a clear relationship between the outer shell electrons and how the periodic table is designed. The number of notations in the electronic configuration will show the number of shells of electrons the atom has, showing the period in which the element is actually in as well. And the last notation shows the number of outer electrons the atom has and showing the group that an element is in. Now, for example, chlorine electronic configuration is 287. Now, how many digits are written over here? How many digits are the? Can anyone tell me the number of digits in this electronic configuration? 3, exactly. The first digit, the second digit, and the third digit. Number of digits will tell you the period number of chlorine, which is period number 3 in the periodic table. And can someone tell me what is the last digit? It is 7. So this would mean that exactly, bilkul, it is present in group number 7. So these are the two pieces of information that you can get from by looking at a electronic configuration as well. And yes, it is a part of your halogens group, rightly said. Elements in the same group have the same number of outer shell electrons. And we have the same example over here of chlorine as well. The number of notations will tell you the period number, and the last notation will always tell you the group number. The red numbers at the bottom show the number of notations, which were 3, या फिर आप number of digits कह लो, showing that a chlorine atom has 3 shells of electrons. And when we talk about groups, the green box highlighted the last notation, which is 7, showing that a chlorine atom has 7 electrons. So here you can see क्लोरीन का एग्जैक्ट कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है, और उसका जो ग्रुप नंबर है वो भी 7 है, विच वी कॉल एज हैलोजेंस एज वेल. ग्रुप 8 का नोबल गैसेस आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. कैन समवन टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन? If you look younger than your age, you might be one of us. If you've never broken a single bone. Okay, good. In today's video, we're going to take a look at the arrangement of electrons in atoms and see how most atoms, like the fluorine that we've shown here, have an incomplete outer shell of electrons. This is a really key point in chemistry because in order for atoms to be stable, they need to have a full outer shell. And if they don't, then they'll have to react with another atom to gain or lose the electrons that they need. Let's start by drawing the electron arrangement of sodium. The fact that it has an atomic number of 11 tells us that it has 11 protons, but also that it has 11 electrons. These electrons are going to be arranged in shells around the nucleus, which we draw as rings like this. And the first one to fill is the one closest to the nucleus, as this one will have the lowest energy level. This first shell can only hold 2 electrons. The second shell, though, can hold up to 8, and the order in which you add them can sometimes be important. The best way to do it is to put a single electron in the top, right, bottom, and left positions before you go round again to put a second electron in each position. This might seem a bit weird or unnecessary, but really you're just adding them in clockwise until you've either filled the shell or run out of electrons. As we still have 1 electron left, we put it in the third shell. And just like the second shell,
The third one can hold a maximum of 8 electrons. In order for atoms to be stable, their outermost shell, meaning the one furthest from the nucleus, needs to be completely full. You can see here that our sodium atom only has 1 electron in its outer shell, rather than 8. So we would say that it's unstable. And all we mean by that is that it wants to react with another atom, so that it can have a full outer shell. Now, most single atoms are like the sodium that we just saw. If they weren't bonded to anything, then they would have incomplete outer shells. And so to fix this, most atoms want to react to form molecules or compounds. However, there are some exceptions to this. The noble gases in group 0 of the periodic table all have completely full outer shells, as we can see with neon. And because of this, they don't want to lose or gain any electrons, and so they don't really react with anything. So can someone tell me what are noble gases? Yes. What are noble gases? All right, inert. And can you tell me the meaning of the term inert that you have mentioned? What does inert mean? They don't react because they have complete shells. Exactly. Okay, they have a complete outermost shell. Good job. When it comes to your exams, you could be asked to work out the electron arrangement of any of the first 20 elements in the periodic table. For example, they could ask, what is the electron structure of argon? For this, we first need to find argon on the periodic table, and we can see that argon has an atomic number of 18, so it must also have 18 electrons. Then, after drawing a quick nucleus, we can start to draw the shells and electrons. The first shell will have 2 electrons, the second shell will have 8, and the third shell will also have 8, because 2 plus 8 plus 8 gives us 18. We can also show this electron structure with numbers though, rather than drawing out all of these shells. And to do that, we would just do 2, 8, 8, to show there's 2 electrons in the first shell, 8 in the second, and 8 in the third. So you see that we have done the two other examples as well, and we talked about chlorine. Chlorine ki jo example, it had 17 protons and 17 electrons, having an electronic configuration of 287. Then I asked someone the electronic configuration of silicon as well, which was 284, and then we have discussed calcium and potassium as well. ठीक है इस तरह करके. So there are two ways. Once you can write the whole notation form as well, and the other method is making a whole diagram, and you can see how the electrons are arranged like in singly as well and in paired structure as well. Okay. Another thing to point out is that when you come to draw these diagrams for yourself, you would actually draw the electrons either as crosses, like this, or as dots, like this one. What if we were asked to do the same for calcium? Well, calcium has an atomic number of 20, so it must have 20 electrons, which means working out from our nucleus, we have 2 in the first shell, 8 in the second, 8 in the third, and 2 in the fourth. And if we were to write this structure, it would just be 2, 8, 8, 2. As we can see from this diagram, calcium atoms aren't stable because they don't have a full outer shell. They only have 2 out of 8 possible electrons in their fourth shell. What would help is if these 2 outer electrons were somehow removed. This would mean that the outermost shell, which is now the third shell, would be full. So can someone tell me what is the difference between a stable and an unstable atom? Anyone who would like to open up their mic and explain me, come on. What's the difference between a stable and unstable atom? Yes, Mipsam, Asher, Abdul Rafiz, anyone? Stable atoms have full valence shell. All right, I have got your answer. Exactly. Or जो unstable होते हैं, they don't have a complete outermost shell. That is why they might have to participate in some kind of bonding as well. That is like quite our next lecture as well.
The noble gases are also known as the inert gases, which are the atoms of the group 8 elements, and they all have 8 electrons in their outer shells, with the exception of helium. So, if helium is one of those noble gases which has like 2 electrons in its shell, but since helium has only 2 electrons in total, the first shell is full. So, and the first shell is the only shell in helium, क्योंकि अगर हम helium की notation देखें तो it looks something like this, right? So this means that helium has a proton number of 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 है और फर्स्ट शेल में आते ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंप्लीट ही. इट डजंट मैटर दैट हैज लाइक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि ग्रुप 8 में आ रहा है, ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है. एंड यस, यू आर कंप्लीटली राइट मिप्साम, दे फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस, एंड obviously because they are unstable, cations anions फिर आपके पास stable हो जाते हैं. All of the noble gases are unreactive as they have full outer shells and they are very stable. All elements wish to fill their outer shells with electrons, and this is a much more stable and a desirable configuration. So here you can see these are the noble gases. And group number tells you what? अभी हमने पढ़ा था that group number, अब ये group number 8 है. And group number 8 है, which means it's going to tell you the number of electrons in the valence shell. We just discussed कि जैसे aluminium है. Now, aluminium is what? If you look in the periodic table right now, you'll see that aluminium is 27 and 13, which means it has 13 electrons. In the first shell, we'll have 2 electrons, and the second one we'll have 8, and the third one we are going to have 3 electrons. Now, by looking at this scientific notation, I can tell two things. How many total number of digits are here? 1, 2, 3, meaning that aluminium is in period number 3. And then you can also check that what is the last digit से. The last digit is what? 3, which means this aluminium is in group number 3. तो अब आप चेक करो, क्या aluminium का group number 3 ही है? Yes. क्या एलिमेंट भी आपके पास जो है ये पीरियड नंबर 3 में आ रहा है? यस, एग्जैक्टली. ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 1 है, और एग्जैक्टली वो पीरियड 3 के अंदर आ रहा है एल्यूमिनियम. लुक एट दिस, एंड इट एग्जैक्टली फॉल्स अंडर योर ग्रुप नंबर 3 एज वेल. So this is what I was talking about at the very yesterday's lecture as well, that in O levels in iGCSE you have to memorize the first 20 elements. Help हो जाएगी. ऐसा नहीं that the periodic table won't be given to you. Obviously you will be given the periodic table of whole separate data booklet and everything. But आपको hydrogen से लेके calcium तक वैसे अगर आप याद रखते हो, it's going to become very very easy for you if you just remember their atomic numbers. क्योंकि एटॉमिक नंबर पता है तो आपको उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही पता होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पता होंगे, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बना लोगे, आप ये बता दोगे वो किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, एंड एवरीथिंग. सो व्हाई डू वी इग्नोर द ट्रांजिशन मेटल्स व्हाइल काउंटिंग द ग्रुप्स? ओके, ट्रांजिशन मेटल्स को हम इग्नोर क्यों करते हैं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? ओके. तो किसी ने भी हमसे सवाल किया इन द चैट बॉक्स दैट व्हाई डू वी इग्नोर द ट्रांजिशन मेटल्स. नाउ द थिंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स, उनके नेम से पता लग रहा है ट्रांजिशन स्टेट में है. ट्रांजिशन मींस वेरिंग स्टेट, दे वेरी. आप ए लेवल्स में जाके पढ़ोगे, एंड इन ए लेवल्स यू हैव अ होल सेपरेट टॉपिक नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स लिटरली. अब आप देख रहे हो कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, फिर हमने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्किप मारा और हम किधर चले गए? सीधा ग्रुप 3 ग्रुप 4. हम इसको भी तो ग्रुप 3 ग्रुप 4 कह सकते थे, बट वी डोंट, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू ग्रुप नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं. कैन समवन टेल मी व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ग्रुप नंबर? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मसला ये है कि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इनको ग्रुप नंबर नाम भी दे दें तो वो आपको उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताएंगे. अब आयरन है, आयरन दो तरह से एग्जिस्ट करता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी. एक है आयरन 2+ और एक है आयरन 3+. अब बताओ आपको ग्रुप नंबर इसमें क्या हेल्प करेगा? आपके पास कॉपर है, कॉपर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 टाइप्स. आपके पास कॉपर 1+ भी होता है, आपके पास कॉपर 2+ भी एग्जिस्ट करता है, राइट? एग्जैक्टली, आपने सही बताया, आयरन 2+ है. फिर आपको पता है मैग्नीज जो है, मैग्नीज इज द बिगेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये आपके पास +1 +2 +3 में क्या तो +7 तक इसकी टाइप्स होती हैं. आपके पास 7 टाइप्स ऑफ मैग्नीज के आयंस हैं. इट्स नॉट लाइक ये बाकी जो आपके पास है ना, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7, ग्रुप 1 से लेके 7 तक जितने भी आपके पास एटम्स है, दे ऑल फॉर्म ओनली वन आयन. मतलब इफ देयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओनली फॉर्म्स एन ऑक्सीजन -2 आयन. दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर. अगर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ऑलवेज फॉर्म्स फॉस्फोरस -3 आयन. If we are talking about boron, let's say, or if we're talking about lithium, lithium will always form a +1 ion. अब यहाँ पे क्या है कि टाइटेनियम
2+B है, 3+B, 4+B है। वेनेडियम आपके पास +5 और +2 इसकी बहुत कॉमन स्टेट्स होती हैं, एक +2 और एक +1। तो ये दे वेरी अलॉट। तो दैट इज वाई दे आर्ट असाइंड ग्रुप नंबर्स, इनके पूरे सेपरेट ग्रुप का नाम ही उन्होंने ट्रांजिशन मेटल लिखा हुआ है, दे वेरी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, गॉट इट? मेप्साम, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So these were the noble gases, and that is why I recommend that you should all just like memorize the first 20 elements. That will help you. Assalamu alaikum. Sir, am Uh, I audible? yes. Subab here. So I just wanted to know who is Muhammad Khan in the meeting. He is one of Can the you please student. tell I'll your let full you name? know. No, no, I'll let you know. What? I'll let you know. Who he is. Yeah. Okay, you know that, right? Yeah, yeah, I know that. Yeah. Okay, okay, okay. Yes. Okay. Uh, all right. So one of the reasons what basically are ions, right? These ions are going to form when they are participating in bonding, because we just talked about atoms in their ground state are like, you can say, they are all unstable. Why does anything bond? To become stable. ठीक है? And आगे जाके in like the tomorrow's lecture we're going to start with the new chapter, which is like your three types of bonding. We have covalent bonding, we have ionic bonding, and we have metallic bonding. So in those three types of bonding we are then going to talk about that why does each of the atom bond, और उसमें भी हमने transition metals अभी भी नहीं पढ़ना। transition metals की खास बात है, they don't even like form bonds, वो आगे जाके आप A levels में पढ़ोगे कि they form ligands, complexes, metal ligands, substitution complexes, and all of them complexes. Bonding कौन elements atoms करेंगे? We have group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Those are the atoms that are going to bond, and that's what we study in the structure of matter. Because you need to know when we talk about elements, जितने भी आपके पास elements हैं periodic table के अंदर, how many elements do we have? 118 elements, right? And remember, all of those 118 elements are arranged in which form? वो सारे आपके पास एटम फॉर्म में ही तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम 2 है तो ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है तो आपके पास N3 लिखा हुआ है, नहीं। यू आर ऑल गिवन कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड bromine. These are all of the different types of atoms given individually over here. आपके पास there's a limited number of elements and all elements are found on the periodic table. How was the periodic table developed, made वगैरह, वो सारे एडेक्सल वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है? ये एडेक्सल स्टूडेंट्स आर बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, एग्जैक्टली। ऑक्सीजन जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एवरी एलिमेंट इज अरेंज्ड इन एन एटम फॉर्म, लेकिन हमारे पास कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम है मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है? कुछ होते हैं जो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो एक रिटन फॉर्म में थियोरेटिकली साइंटिस्ट ने जो चीज़ डेवलप की है पीरियोडिक टेबल, उसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास एटम फॉर्म में है, ठीक है? एग्जिस्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऑक्सीजन हमेशा एग्जिस्ट एज O2 करता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का मतलब अगर आपसे कोई बोले हाइड्रोजन क्या, आप लिखते हो H2 लिखते हो, एग्जैक्टली। दैट इज व्हेन दे बिहेव, व्हेन दे बॉन्ड, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन योर एक्चुअल रियल लाइफ। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेटा दैट इज गिवन टू अस इन द पीरियोडिक टेबल, वो सारे एटम्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कहीं भी आपको मॉलिक्यूल या कंपाउंड या सोल्यूशन वगैरह नजर नहीं आएगा, गॉट इट? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी, मिप्साम। एंड यस अशर, यू आर टॉकिंग अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इतना वो है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, इट्स अ होल सेपरेट चैप्टर। नोबल गैसेस का मतलब होता है, नोबल मीनिंग इनर्ट, या फिर यू कैन से अनरिएक्टिव, क्योंकि दे आर दोज गैसेस विच हैव अ कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड दे एग्जैक्टली हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑफ दोज एटम्स। जितने भी आपको नोबल गैसेस के अंडर आते हैं उन सब के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज वाज द बेसिक्स ऑफ बॉन्डिंग एंड द एंड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स we'll be starting with the three types of bonding. Is everyone clear? If anyone needs the recording, he can text me as well. Allah Hafiz.